हाँ तो सुन Check the mic and make sure it sound right, boys. Alright, if you travel by plane, you probably know what this piece of paper is. It's a boarding pass. From getting inside the airport to enjoying premium lounge access, this is probably the most important piece of paper you need while traveling. But what happens if you post this online for everyone to see? I asked some of my friends the same question and पास को ऑनलाइन पोस्ट किया जाए तो क्या हो सकता है? डेस्टिनेशन पता चल सकता है। अगर बोर्डिंग पास को ऑनलाइन पोस्ट किया जाए तो क्या हो सकता है? बोर्डिंग पास को तो पता नहीं, वो टिकट नंबर से कुछ तो होगा। क्या होगा? अपना जवाब चेंज करना चाहेंगे आप? अगर वो कंपनी की वेबसाइट अगर सिक्योर्ड नहीं है तो कोई भी आपकी डिटेल्स निकाल सकता है उसकी डेटाबेस से। डिटेल्स ऑलरेडी रहती है उसमें, नाम ये बारकोड सब रहता है ना। ओके, बैंक डिटेल्स बोल रहे हैं? नहीं, बैंक डिटेल्स नहीं, आपके जैसे जो बाकी आपने फीड करा है ना, आपकी फ्लाइट प्रीवियस फ्लाइट डिटेल्स कैसे सब है वो सब ट्रैक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जो भी डिटेल्स उनके पास होंगे। क्योंकि नाम भी तो ऑलरेडी हुए तो होते हैं, डेट भी रहेगा, किधर जाने वाले हो वो भी होगा, वो तो ऑलरेडी हो सकता है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी हो, क्योंकि हमें बोली हमें वही बोल रही है। अंजलि, हमारा एक सवाल, पूछो। बोर्डिंग पास को ऑनलाइन पोस्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या? बोर्डिंग पास। मैं इधर इंटेलिजेंट नहीं हूँ। While it does tell your friends about your travel plans and some not so good friends that you'll not be home for a while, you're potentially giving away a lot of private information that is just not related to your travel. Boarding passes show your last name and PNR that you use to log into the airline's website, do web check-in and change your flight information. But while most websites do not handle your private information very well, they never even check if it's really you who has logged in. With that said, let's get into it and let's talk about boarding passes. This hack is especially interesting to me because it's one of the first things I learned about 7 years ago and I'm glad to see it still exists क्योंकि वीडियो के लिए कंटेंट मिल गया. But before I get into this vulnerability, I want to make it clear that unfortunately the company that was involved in this did not want to be a part of the video, and unfortunately I cannot reveal the name of the company. So in this video I'm going to refer to it as an airlines company that allows you to do web check-in on their website and change your upcoming flight information. And as always, the biggest part about this research and the fun that comes with it is that I found all of this by accident. The way I came across this was that this website allows you to do web check-in using your last name and PNR. But they don't check if the person who's logged into their website is really the person who booked the flight. And so while I was doing web check-in for an upcoming flight, I opened the dev tools to see the requests that were being made in the background, and in the console I saw an unusually large amount of JSON data. And looking through it, I found several logs containing my private information inside a PNR response field. Things like my email address, home address and my phone number. Now you can argue that this is data that only I can see because I'm the one logged in, right? Wrong, 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 wrong. If you get my boarding pass details, you can go to the same website and log in using my PNR and last name and look at all this information. और किसी को पता भी नहीं चलेगा. Not the airlines, not me. But how would you get the boarding passes of other people? Don't worry, they make it very easy. One of the ways you do this is by searching Instagram. You can easily find people who post their boarding passes online. Look for images that contain the full barcode or at least the PNR and the last name, because that is what most websites require. And while you might not get a lot of images that could work, the number of people still posting their boarding passes online is a lot. And there is a great DEFCON talk by Zerem Jarosiewski from 2016 which explains in great detail what information is available in the barcode of your boarding pass and how you can change that information to get free stuff at the airport or a business class upgrade on the flight. I'm going to put the link in description, do check that out. Now back to the image. The PNR and the last name are clearly visible, so all you have to do is go to the airline's website and log in through their web check-in portal. Even if the boarding pass is for a flight that's already happened, it does not matter because companies like to store your data for a while. 7,000 years. That's not news.
थोड़ी सी मेहनत के बाद I also found the API that was bringing all of this data into the application. That API takes a PNR and last name and returns a JSON response containing all the details. And if I query this API repeatedly with a list of names and PNR, I can create a database of all the private information, sell it online on the dark web. पैसा ही पैसा होगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात, आपको जेल हो सकती है। Seriously, don't do this. So after confirming what I had found, I tried to find if this company had an active vulnerability disclosure program running where I could report this. They didn't, but I found an email in their privacy policy that seemed appropriate for reporting this vulnerability. Unfortunately, that email was not working and they didn't have a security.txt file attached to their domain either. After this, I tried contacting the airlines via their Facebook, Instagram and Twitter handles. The responses were not so great. See, I know the people managing these social medias are from the PR team, but I had to try. Then I looked at LinkedIn to find people working in the airlines tech department and sent connection requests to the management stating what I had found. Also asking them if they could forward this information to their IT security team. One of them replied and the next day I got an email from someone in the IT security team asking if I could present to them a full impact analysis of this vulnerability in an online meeting. But here's the interesting thing. I did not do any elaborate hacking. I just viewed source. And viewing source is not a hack. The browser does it for you. Sometimes it's interesting to see the security standards of a $26 million company get defeated by a browser feature that has been there since the inception of browsers. It's also from before I was born. Why did this vulnerability exist? Developers often use console to debug their code. In this case, they would have used it to check if data from a backend service is coming into this application. And when the code was finally merged with the public version of the website, they forgot to remove the console log part. Actionable advice: don't post your boarding pass. But on the plus side, I got to test some more websites in the process, and I saw one particular website throw a warning on the console asking not to post sensitive data there. So that's a good step towards spreading awareness, and I hope this video is another. फॉर अ वेडिंग, इसके बाद महाबलेश्वर जाने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वन। नॉट श्योर इसका कंटेंट क्या होगा, बट आई थिंक आई विल फिगर इट आउट ऑन द वे। आई एम वेटिंग फॉर अंजलि, तो उसकी फ्लाइट भी अभी लैंड हुई होगी। तो वी गोना गो टुगेदर। बीच में 2 लोगों को और पिकअप करना है एंड टॉक टू यू लेटर। पूरे 1 घंटे हो चुके हैं, अंजलि अभी तक नहीं आई है। आइए। सुपर एग्जॉस्टेड। नहीं पढ़ा था तुमने? मुझे नहीं आता, मैं तो कर लो कितनी करोगे? कर लो। अच्छा, ये जो स्टिक है, ये इसके साथ ही मिली है, अलग से लिया है? सब अलग से, ये माल लगा है, माल। अरे टू करूँ मैं कुछ या नहीं? वो क्या बुक करनी है? वहाँ पे वो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। रुको, तो वेट कर रहे हैं। हाँ। ओह माय गॉड। जर्नी थी, फ्लाइट जर्नी, 2 कनेक्टिंग रिपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट की सीन थी प्लस, बट या इट इज एट पुणे एंड द प्लानिंग इन पुणे इज दैट कि मैं अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड की शादी अटेंड करने जा रही हूँ और मेरी यार की शादी है, तो वहाँ बहुत सारे दोस्त मिलने वाले जिनको हम रास्ते से उठाने वाले हैं। अभी I got one more my friend. इधर आओ ना। अरे तुम्हारा अपना सेल्फी का वो दिखाओ। तो यहाँ पर नहीं, घुमा भी तो सकती है। ये भी कैमरा ये व्लॉगिंग ही कर रहा है। तो मेरा बॉटल ही गिर गया और टूट गया। और मैं लोगों को सिखाई हूँ कि we should carry our bottle from our home. We should start everything a single one step from our home itself. क्योंकि मैंने पता कि इतनी बड़ी अच्छी लाइन मारी है वहाँ पे, अपने आप ऑटोमेटिकली निकल गया कल वीडियो बनाते वक्त कि आपको माउंटेन या बीच में पहाड़ों और इंसानों से ज्यादा प्लास्टिक बॉटल मिलते हैं। चलो अच्छा ना, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कम हो गया उधर। तो we should carry a bottle. तुम्हारी बॉटल कौन सी थी? मेरी शीशे की? है, क्या? अभी भी जिंदा है, बट थोड़ी सी वो लीक हो गई है। अच्छा। So it's okay. नहीं है किसी की, सेरामिक या शीशे या स्टील की है? हाँ। मैं अभी लेकर आऊँ स्टील की, हाँ। लेकिन पता नहीं भाई खौफ में हूँ मैं। बंद करो, कितना स्टोरेज है तुम्हारे पास? हाँ, शादी भी हो जाएगा उसमें और तुम क्या मेरी वीडियो कर रहे हो?
कंटेंट यहीं से तो आएगा। फ्लाइट चढ़ी होती नहीं है कभी, वो बैलगाड़ी चढ़ी हो जाती है। 1 घंटा में चलो, 1 घंटे के रास्ते में आपको 15 मिनट के रास्ते में 1 घंटा लग जाता है मेरा। पूरे गाँव वाले आके वो वाला पार्ट बोल रही है। जो प्लेसेस जा रहे हैं ना, ये YouTube पे जाएगा ना? नहीं दिख नहीं रहा कुछ। ऐसा ही से इधर का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अभी नहीं, कैसे करते? गाना तो गा लो कोई। ये सारे उड़ी। कितना मेरे पे ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? ऐसा ही होगा यार। तुम्हें ये क्यों मिली? गिफ्ट क्या दिव्या? ये वो कर रही है, दिव्या क्या हो गया? डैप कर रही है। डैप कर रही है, हाथ तो ऊपर करो। आप कितनी कूल हो गई है यार ये। क्या मंगाया क्या था तुमने? वही तो देख रही हूँ क्या है, वो उससे ही पता चलेगा। देख रहा हूँ भाई। बर्थडे के लिए त्रिवेंद्रम से आया पूरा दिव्या ने। घूम घाम के। ये कितना घुमा है पता है? पुणे से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से फिर से पुणे, पुणे से फिर से त्रिवेंद्रम, फिर जाके वो कर लेते। नहीं चाहिए। क्योंकि सास भी कभी ये है मेरे दोस्त, जो कि दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे बड़े अच्छे वाले हैं। दोस्त के नाम पे धब्बा है। ये तो क्लीशे हो जाएगा ना फिर। क्या क्या दिव्या? दोस्त के नाम पे धब्बा। धब्बा। It sound right, boy. ये काफी अच्छी जगह है। देखो यहाँ पे बीच में ये एक घर है, which is the home for a heart surgeon, and see, this is the place we entered from that road, and that is our place where we're staying near the bus. This is the heart surgeon. That the place is situated in the middle. हाँ, हम तुम्हारी लेते रहेंगे। It sound right, boy. खाने की तैयारी चल रही है, शादी का पानी का खाना। कैसा दिव्या खाना? It sound right, boy. सकाळपासून आम्ही पण नाही, मी सांगते नाश्ता बाकी मम्मीला म्हणते, मम्मी मध्ये काय खायचं काम कर बाकी
स्नॅक्स हे लोक पण हेच बोलतात खाण्यासाठी मी पण आपल्या जे जमेल तेवढं कैंसल होगा क्या एक दिन का अपना ये तुमने कल का भी मतलब उस बुकिंग में ही है कल का या हमने 2 दिन का हमने आज से करी है, आज रात से आज रात यानी आज दिन 11 बजे से बुकिंग चालू है। अब देख वो एनटीडीसी का सोच रहे थे हम लोग। हाँ तो बस यही है ना, उस समय थोड़ी पता है कि क्या होने वाला है। एक बुकिंग करो आगे चलो। पता है वही हो जो अपना आज का होटल है ना, मतलब आज जो लॉज, हाँ उससे में रह जाते हैं मस्त। हाँ वो सही था। ज्यादा और ये भी नहीं रह वो तो चार्जेस ऑनलाइन में देख सकते हैं, मैं सोच रहा था देख लेता। मैं भी कल सोच रही थी। उस समय थोड़ी पता है कि हम इस तरीके से रहेंगे, वो तो है तो एक प्लान तो फिक्स करके करना है। तो ये होता ही है। Check the mic and make sure it sound right, boys.